So this topic is basically about what is meant by perception and what are the different factors involved in affecting our perception and that are very important for all of us. So what is meant by perception? Perception is important for understanding individual differences because how people perceived a situation determines how people behave. परसेप्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने नज़रिए से हर सिचुएशन को परसीव करता है और जैसे हम सब इंडिविजुअल्स डिफरेंट सिचुएशंस को इंटरप्रेट करते हैं उसी तरीके से हम different situations में behave करते हैं. So perception is a part of that personal dimension that makes people see situations differently as well as shapes their attitude in different terms of their work environment. Means perception हमारे personal dimension का ही एक पार्ट है जिसमें लोग मुख्तलिफ तरीके से हर सिचुएशन को देखते हैं वही सिचुएशन जिसको वो इंटरप्रेट करते हैं अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उनके एटीट्यूड को उनके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है इसीलिए हर इंडिविजुअल का माइंडसेट क्योंकि डिफरेंट है तो उनका परसेप्शन भी डिफरेंट होता है और अकॉर्डिंग टू दैट परसेप्शन हर इंडिविजुअल का बिहेवियर दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है. So this lesson seeks to help students in describing these major points. Describe the major element of perceptual process. Identify the main factors that influence what individual perceive and in identifying factors that determine how one person perceives another. So major elements कौन कौन से हैं जब भी हम परसेप्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है या मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे परसेप्शन को मुतासिर करते हैं और किस तरह से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट परसीव करता है और यही फैक्टर्स हर इंडिविजुअल की परसेप्शन को इफ़ेक्ट करते हैं. So, perception basically refers to interpretation of what we take in through our senses. So, हम अपने different senses के through मुख्तलिफ situations में different चीज़ों को experience करते हैं, different situations को experience करते हैं, हम किस तरह से उनको interpret करते हैं वो डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पर उनके माइंडसेट पर सो हर इंडिविजुअल उसको अपने परसेप्शन के मुताबिक उसको इंटरप्रेट करे. Perception is a process by which people select, organize and interpret information to form meaningful picture. Perception एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर इंडिविजुअल कोई भी सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहा हो वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा अपने अकॉर्डिंग और उसको एक मीनिंगफुल पिक्चर की फॉर्म में उस सिचुएशन को जनरेट किया जाएगा. हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं उसी के अकॉर्डिंग और हम मुख्तलिफ चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं और यही हमारे परसेप्शन को क्रिएट करता है. So, perception is basically a process by which people select, organize, interpret and respond to information from the world around them. So according to them, according to different personalities, people according to their mindset, they used to organize, interpret, give interpretation to and meaning to different kind of situations in their surroundings. So perception is a selection and organization of environmental stimuli to provide meaningful experiences for the perceiver. परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम अटेंशन देते हैं. इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ताकि
वो हमारे लिए एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस कहलाया जाए. So it provide meaningful experience for the perceiver. The perceptual process consists of the following element. तो ये जो perception process है इसमें different elements involved होते हैं जो कि हमारे perception को भी इफेक्ट करते हैं. Environmental stimuli, observation, perceptual selection, organization, interpretation, and response. So these factors will be discussed one by one with proper explanation. In order to make sense of our world, our brain try to see patterns or shapes that are recognizable. This principle is called grouping. So हम जब भी किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं, हमारा ब्रेन उन चीज़ों को एक ख़ास पैटर्न देता है, एक ख़ास शेप की फॉर्म में रिकग्नाइज करता है, उनकी पहचान करता है. और इसी प्रिंसिपल को ग्रुपिंग का नाम दिया गया है. जैसे डिफरेंट लॉज हैं, उन लॉज के अकॉर्डिंग हम किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं. फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, proximity, continuity, and of closure. So according to these law, for example, in a similarity law, these objects are considered or perceived in the form of group. In proximity, if they are closer and they are in parallel lines, so they are perceived in the form of group. And continuity में different situations की base पर, for example, if there is a continuous pattern, so we will perceive that in continuous lines. And closure so means we will take that image as a whole. The mind forms shapes that does not exist and that don't exist. Actually, मेरा माइंड बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों को परसीव करता है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द concept of illusion. So here are different images given for example. This is also called as the concept of illusion, in which we can perceive according to our own perception. We give means we can interpret according to our own mindset. So every person, when while seeing this picture, they can interpret it differently, and this is called as illusion. So here is an activity which is based upon seeing the color, not the word, which is just perceived differently by different individual, and it depends upon your own mindset, your brain, that your left brain insists on reading the word, but you have to say the color, not the word. So when you look at this figure, you will see either a vase or two faces. If you continue to look, the figure will appear to shift to the alternative organization. Means if we will just give attention to that white area, we can perceive it differently, but when we will give attention to that darker side, our perception will be different. We will perceive it differently. So not all the individuals will perceive this image as the same, but they will perceive it differently. So it depends and it shows that how our perception differs from one person to another. Any moment you see, this is called as illusion. Actually, our mind is generating and creating such images which are actually not present. So when we say that perception is affected by different factors, so the different factors involved in perception include environmental stimuli as well.
सो परसेप्शन को जनरेट करने के लिए या वो किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकती है उसमें इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई भी इंक्लूडेड है. People receive stimuli from the environment through their senses. Through different senses, they receive different stimuli. And when they observe their environment, जब भी environment में stimuli को observe किया जाता है, so हम उसे अपने different senses के through perceive करते हैं. Sense of sight, hearing, taste, touch, and smell. So, second one is perceptual selection. When the stimuli are received, a person might pay attention to some of the aspects in the environment and ignore other. जब भी हम perceive करते हैं किसी भी information को हम interpret करते हैं किसी भी situation में जब किसी stimuli को environment में receive किया जाता है so हर इंसान जो है वो इन्वायरमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स को अटेंशन देता है और कुछ फैक्टर्स को इग्नोर करता है. सो दिस फिल्टरिंग आउट ऑफ मोस्ट इंफॉर्मेशन टू डील विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर इज रेफर्ड टू एज सिलेक्टिव स्क्रीनिंग. इस फिनोमिना को सिलेक्टिव स्क्रीनिंग का नाम दिया गया है जिसमें हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर को जो हाईलाइटेड होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अटेंशन देते हैं और कुछ फैक्टर्स को हम इग्नोर करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव स्क्रीनिंग. The influence factors are due mainly to external and internal factors. अब जो फैक्टर्स ज़्यादातर हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमारे आउटर वर्ल्ड यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी और इंटरनल फैक्टर्स पर भी बेसिकली हम पर भी डिपेंड करते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट सिचुएशंस को इंटरप्रेट कर रहे हैं और किस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे परसेप्शन को मुतासर करते हैं. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर साइज, इंटेंसिटी, कंट्रास्ट, motion, repetition, novelty, and familiarity. A combination of the above may be operating at any time. So these are the different external factors जिसमें size, intensity, motion, repetition, कोई भी नई चीज़ कोई भी familiar object या फिर different object हम उनको environment में अगर कोई भी ऐसे factors involved होंगे किसी भी object में हमारा perception इन चीज़ों की वजह से इन factors की वजह से मुतासर होता है. So the factors affecting perception include different factors, but the two most important factors, internal factors and external factors. Factors that influence perception relate to the perceiver. वो factors जो कि हमारे perception को influence करते हैं different तरीके से perceiver पर डिपेंड करते हैं जो perceive कर रहा होता है जो जिन चीज़ों को perceive किया जाता है और जिन situations में उनको perceive किया जाता है. So different factors हैं जो कि हमारे perception को affect करते हैं. All these factors are of two kinds. First kind is internal factor, endogenous factors भी जिनको कहा जाता है. So the needs and desires are included in the first category of internal factors. An individual's perception about stimuli is influenced by internal needs and desires at that time. So हर individual का perception किसी भी stimuli के लिए किसी भी object के लिए इन्फ्लुएंस होता है हमारी अपनी नीड्स हमारी अपनी डिज़ायर्स की वजह से हमारा परसेप्शन भी मुतासर होता है. सो जो हमारी नीड्स और डिज़ायर्स होंगी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमारा परसेप्शन उससे हमारा नज़रिया उससे भी मुतासर होता है. सो पर्सनालिटी closely related to needs and desire is the personality of the perceiver. ये भी हमारी अपनी डिज़ायर्स और नीड्स से ही लिंक करता है. हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे परसेप्शन को काफ़ी हद तक मुतासर करती है. सो इट इफेक्ट व्हाट इज़ अटेंडेड और परसीव्ड इन द गिवन सिचुएशन. हम
सिचुएशंस में किन चीज़ों को अटेंशन देते हैं हम, किन बातों को प्रायोरिटी देते हैं, और वो चीज़ हमारी पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करती है। सो हम जिन चीज़ों को अटेंशन दे रहे होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करता है और उसकी वजह से हमारा परसेप्शन भी मुतासर होता है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज सर्व्स एज बेसिक फॉर परसेप्शन। हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा, जो हमारी नॉलेज होगी, उसी की बेस पर हम चीज़ों को जज करते हैं, परसीव करते हैं और एनालाइज करते हैं. So this internal factor is also important and it also affect our perception in different ways. Now, the basic concept about cognitive psychologists have also worked to understand how motivations and expectations can play a role in the process of perceptions. So, cognitive psychologist के according हम कैसे अपनी motivation के according, अपनी expectation के according हमारा perception effect होता है, और हमारे perception के process में motivation, हम जिस चीज़ के लिए मोटिवेटेड होते हैं हमारा परसेप्शन भी वैसा ही हो जाता है. And our expectations also raise according to that situation. So perception can also be influenced by an individual expectations, motives and interest. परसेप्शन हमारा जो नज़रिया है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी डिज़ायर्स और हमारी मोटिवेशन के अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट होता है. Term perceptual set refers to the tendency to perceive objects or situations from particular frame of reference. The motivation can play an important role in perceptual sets and how we interpret the world around us. So motivation बहुत important role play करता है हमारे perceptual set को enhance करने में, हमारे perception को affect करने में. हम कितने मोटिवेटेड हैं, हम आउटर वर्ल्ड को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट सिचुएशंस को ले रहे हैं, हमारा परसेप्शन भी वैसा ही हो जाता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. If we are rooting for our favorite sports team, we might be motivated to view member of the opposing team as overly aggressive, weak और incompetent. अगर हम एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो ऑब्वियसली ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि हम अपोजिंग टीम को, ऑपोजिट टीम को एग्रेसिव, वीक या इनकॉम्पिटेंट समझेंगे. So this may be our perception, and in one classic experiment researchers deprived participants of food for several hours. कुछ एक experiment किया गया था जिसमें researchers को food नहीं दिया गया था, and they were deprived from the food for several hours. When they were later shown a set of ambiguous images, those who had been food deprived were far more likely to interpret the images as food related objects. So अब उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को जिन पर रिसर्च की जा रही थी, जिनको फूड के लिए डिप्राइव किया गया था या जिनको फूड प्रेजेंट नहीं किया गया था, जब उनको कुछ एम्बिगुअस इमेजेस दिखाई गई, सो दे इंटरप्रेटेड दोज इमेजेस एज food related objects because they were hungry, and their main motive was to get that food. That's why their perception was also affected. So because they were hungry, they were more motivated to see the images in a certain way. So our perception is greatly affected by our motivations and expectations as well. Expectations also play an important role. For decades, research has shown that our perception of the world is influenced by our expectations. हमारी expectations हमारे perception को बहुत ज़्यादा affect करती हैं. So these expectations, also called prior beliefs, help us make sense of what we are perceiving in the past, in the present, based on similar past experiences.
ये एक्सपेक्टेशन हमारे प्रीवियस बिलीव्स की वजह से, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से क्रिएट होती है. If we expect people to behave in certain ways in certain situations, these expectations can influence how we perceive these people and their roles. अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कि वो हमें प्रेजेंट सिचुएशन में वैसा ही बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं, सो या वैसा ही परफॉर्म करे, सो ये एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस कर सकती हैं हमारे परसेप्शन को. जैसे हम लोगों को परसीव करते हैं, जैसे हम उनको जज करते हैं, सो हमारा परसेप्शन हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक भी इफेक्ट होता है. One of the classic experiments on the impact of expectation on perceptual sets involved showing participants either a series of numbers or letters. एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें एक्सपेक्टेशन का इम्पैक्ट हमारे परसेप्शन पर देखा गया है, और उसमें पार्टिसिपेंट्स को कुछ नंबर्स और कुछ लेटर्स दिखाए गए हैं. Then the participants were shown an ambiguous image that could either be interpreted as the number 13 or letter B. पार्टिसिपेंट्स को कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं जिनको जो पार्टिसिपेंट्स हैं नंबर 13 या लेटर बी के तौर पर इंटरप्रेट कर सकते हैं. Those who had viewed the number were more likely to see it as 13, while those who had viewed the number, the letters, were more likely to see it as the letter B. वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने नंबर्स को देखा हुआ था, जो नंबर्स को देख चुके होते हैं या उसको एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, सो वो उन एम्बिग्युअस इमेजेस को देखेंगे एज नंबर 13, while those who had viewed the letters were more likely to see it as letter B. जबकि वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने लेटर्स को देखा है या लेटर बी को, सो वो अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उस लेटर को, उस इमेज को लेटर बी के तौर पर कंसिडर करेंगे, उसको देखेंगे. सो इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मेजर रोल इसमें अदा करती है, जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारा परसेप्शन मॉडिफाई होता है और हमारा परसेप्शन उसकी वजह से इफेक्ट होता है. Culture also influences how we perceive people, objects and situation. Culture भी हमारे परसेप्शन को इफ़ेक्ट करता है. हम लोगों को जिस तरह से परसीव करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट सिचुएशंस को. Culture influences our different situations, people, objects. So surprisingly, researchers have shown that people from different cultures even tend to perceive perspective and depth cues differently. Perception includes the five senses: touch, sight, sound, smell and taste. So वो लोग जो कि different cultures से belong करते हैं, वो अपने डिफरेंट परसेप्शंस के साथ होंगे और वो डिफरेंट क्यूज़ को डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करेंगे. परसेप्शन में हमारे डिफरेंट सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ कॉग्निटिव प्रोसेस रिक्वायर्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन. इसमें हमारा कॉग्निटिव माइंडसेट इन्वॉल्व होता है, सच एज रिकग्नाइजिंग द फेस ऑफ फ्रेंड और डिटेक्टिंग अ फेमिलियर सेंट. जैसे कि हम किसी भी फ्रेंड का फेस रिकग्नाइज करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं कोई भी सिमिलर फैक्टर, कोई भी सिमिलर चीज़, तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर, अपने कल्चर की बेस पर उन सिचुएशंस को परसीव करते हैं, उन लोगों को परसीव करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को, उन सिचुएशंस को. सो कल्चर का हमारे परसेप्शन पर भी इफ़ेक्ट होता है. How the process work.
The environmental stimuli, the world is full of stimuli that can attract attention through various senses. The environmental stimuli is everything in the environment that has the potential to be perceived. अब ये जो परसेप्शन का प्रोसेस है ये किस तरह से अकर होता है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, जो कि कोई भी चीज़ हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो सकती है जिसको हम परसीव कर सकते हैं. The attended stimulus. The attended stimulus is the specific object in the environment on which attention is focused. कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जिस पर हमारा फोकस ऑफ अटेंशन होता है, जिस पर हमारा फोकस होता है मेजर. सो द इमेज ऑन द रेटिना, दिस इन्वॉल्व्स द लाइट. एक्चुअली ये प्रोसेस जिसमें हम इन्वायरमेंट में किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको अटेंशन देते हैं. थर्ड स्टेप में हमारे आई का जो पार्ट है उसमें रेटिना पर image formation किस तरह से होता है. This involves light actually passing through the cornea and pupil and on to the lens of the eye. The cornea helps focus the light as it enters the eye, and the iris of the eye controls the size of pupil in order to determine how much light to let in. So, in this way, the cornea and lens act together to project an inverted image onto the retina. और एक प्रोसीजर के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू फोकस होता है लाइट का. जो लाइट इंटर होती है आई में, आइरिस कंट्रोल करता है आई को और साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल करता है, ताकि कितनी लाइट इंटर होनी है हमारी आई में ये इम्पॉर्टेंट है. वो इमेज फॉर्मेशन क्रिएट होती है. कॉर्निया और लेंस जो है वो एक साथ काम कर रहे होते हैं ताकि एक इमेज प्रोजेक्ट हो सके, इन्वर्ट हो सके ऑन द रेटिना. सो बाय दिस वे वी कैन परसीव एन इमेज. Transduction. The image on retina is then transformed into the electrical signals in the process known as transduction. जो electrical signals की form में ये image transform होती है. This allows the visual messages to be transmitted to brain to be interpreted. और brain में फिर ये message electrical signal, electrical impulse की form में interpret किया जाता है. Perception. In this step of process, you perceive the stimulus object in the environment. It is at this point that you become consciously aware of the stimulus. और ये जितने भी steps involved होते हैं, इसके बाद एक object को हम perceive करते हैं और यहाँ पर हम consciously aware हो जाते हैं of any situation, object in the environment. Next step is recognition. The ability to interpret and give meaning to the object is the next step known as recognition. So जिसमें हम meaning देते हैं उस object को, उसको recognition का step कहा गया है. Action. The action phase of perception involves some type of motor activity that occurs in response to perceived and recognized stimulus. So जो हम मोटर एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड होती है जिसमें हम परसीव करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, दिस माइट इन्वॉल्व अ मेजर एक्शन लाइक रनिंग टूवर्ड्स पर्सन इन डिस्ट्रेस और समथिंग. व्हेन वी रिकग्नाइज, व्हेन वी डिटेक्ट and give meaning to something, so we take step. Or something as subtle as blinking your eyes in response to a puff of dust blowing through the air. So when we give reaction to something after recognizing, after having perception, we take action upon that. So what are the 5 stages of perception involved in creating our perception? Stimulation is the first step that is involved in the stage of perception. So the occurrence of sensory stimulation, basically this part of perception process involves in contact with a particular stimulus. So the world is full of stimuli that can attract our attention through various senses. अब हमारा
अटेंशन किस चीज़ पर जाता है, किस ऑब्जेक्ट पर, किस इवेंट में, किस सिचुएशन में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो बेसिकली हमारा फोकस ऑफ अटेंशन डिफरेंट सेंसेस के थ्रू जनरेट होता है. Thus we are able to describe systematically the sight, sound, smell and taste that populate our conscious experience. So different senses जिसमें sense of sight, sense of sound, smell, taste, ये सब senses involved हैं, ये हमारा conscious experience generate करते हैं. So stimulation includes selective attention and selective exposure. Stimulation में हमारा selective attention जो हम जिस object को देते हैं और selective exposure होता है. So selective attention occurs by anticipating, fulfill needs and prove enjoyable. For example, friends talking to you, but you were daydreaming. You won't hear what they are saying until they called out your name. So आप तब तक किसी friend की बात, for example, if you are not involved in listening to them and you're daydreaming, so you can't hear them until they call out your name. So your attention and your focus will be then given after they call out your name, and that thing attract your attention through your various senses. So the second step involved in perception process is organization. As your body spreads large amount of information throughout the body, your brain recognizes familiar ideas and concepts and connect them with the past experiences. जो भी हम experience करते हैं उन familiar ideas को हमारा brain past experience के साथ relate करता है. So this allows your brain to understand what is happening. So हमें understanding developed होती है कि एक्चुअली में आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्या हो रहा है. So during this phase, receptors in your body construct mental representation of stimulation you experience. So इस तरीके से आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो माइंड में उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं that you are experiencing. So this is called a percept. They help us arrange ideas in our mind with the help of patterns. So patterns help us group our ideas so that we can interpret them. और इस तरीके से जब पैटर्न क्रिएट होता है, आइडियाज जनरेट होते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, so we can interpret those ideas, and this process or this step involved in the process of perception is that's why called as organization. So the third step involved in perception process is interpretation evaluation. When your body recognizes events and features, you apply your own experiences and biasness. For example, आप जब भी कोई event experience कर रहे होते हैं, आप अपने past experiences, अपने जो आपकी biasness, अपनी judgment, वो आप उस situation में apply करते हैं ताकि आप उस situation को evaluate कर सकें. So your evaluation, or you evaluate your own experience and relate it to your past values and beliefs. और अपने past experience की base पर, values और अपने beliefs की base पर हम judge करते हैं उस situation को. So this helps you determine how to react to situations in front of you. So when we interpret information, we give it meaning. So जब भी हम किसी भी situation को interpret करते हैं, हम evaluation के through उसको meaning दे रहे होते हैं और इस तरह से हमारा perception generate होता है. Fourth one is memory. So when your body stores events and moments in your brain, they become part of your memory. So जब भी हम ये situations experience कर रहे होते हैं, कोई भी information, कोई भी data हमारे brain में memory की form में store हो जाता है. So you will build association between those moments and personal beliefs and experiences, and memory can relate to good or bad experiences. So memory में दोनों तरह के experience आ जाते हैं. You may not even realize
You have memory stored until another stimuli reminds you of something that happened. So your body stored not only the specific stimuli you experience, but also your feelings about them. So just वो डेटा मेमोराइज नहीं करते, बल्कि उसमें जो फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं हम उसको भी मेमोराइज कर लेते हैं. So for example, you might experience walking with your father at park as a positive memory. So you can store that memory in your mind, और वो mind में store हो जाती है in the form of memory. So you might store a memory of being lost and scared as a negative memory as well. So no matter what the situation, you can memorize that situation anyway in your mind in the form of memory. So the final step in generating a perception is recall. You can even recall moments from your life to evaluate them. When you do this, you bring a perceived event to your mind to retrieve details. When you recall moments often, you can begin to do so more accurately, and you may also realize that over time, the memories you are able to recall change. So your recall may even change some elements of your memory. So जब भी हम उस situation को, कुछ ऐसे moments जिनको हम याद करना चाहते हैं, जिनको हमने experience किया होता है और उनको recall करना चाहते हैं, so sometimes it also happens that memory can also be changed and can be interfered by the new information that we have gained. So perception ultimately helps people of different experiences assign meaning to information and events in their life. Perception में हम उन events को, उस information को कुछ meaning देते हैं और वो हमारे mind में memory की form में restore हो जाता है, जिसको हम बाद में recall भी कर सकते हैं. So each person also perceive events differently from other. हर individual अपनी perception के according उस situation को differently perceive करेगा, and this makes perception subjective. So ये perception का जो process है हर individual के लिए इसको subjective बनाता है, क्योंकि हर individual इसको अपने mindset के according perceive करता है. So here are different perceptual errors that affect our perception. Accuracy in judgment is very important, but sometimes similarity error may also occur, assuming that, in which people assume that who are similar to us in some ways, people that are similar to us in terms of our background, if we have same interest and hobbies, so we think that they will behave like us as well. So this perception is totally wrong sometimes, and it affects our perception. Contrast error. So contrast error mean we compare people to other, so comparing people to other rather than to some absolute standard. So when we compare people to other, we do not compare them with certain kind of standards. So this is called as contrast error. Overweighing of negative information means a tendency to overreact to something that is negative. So this is also a perceptual error in which we sometimes overreact to something negative. Second one, another one is race, age, and gender biasness. So, tendency to more or less positive based on one's age, race, gender. So, according to that, we have personal biasness. So, biasness should not be created on the basis of race, age, gender. So, our perception is also affected by these characteristics. So, first impression error, forming first impression that are resistant to change. So, sometimes we judge people too quickly, that we create their image and their impression in the first meetup. So, sometimes those creating or giving
such kind of impressions are totally and are they are resistant to change. They can be changed. So our perception is totally affected by first impression. So another perceptual error may also include attractiveness stereotype, in which the concept is like people who are attractive are perceived to be smarter, funnier, and more competent than less attractive people. So this kind of stereotype also affect our perception. This is perceptual error. Halo effect. So, halo effect is when one trait of a person or thing is used to make an overall judgment of that person or thing. For example, when we think that or we say that that person is smart, so we can say that if that person is smart, that person may also be nice. So, some ways it creates a judgment that is not effective or that is used to make an overall judgment of that person. So, hollow effect is when one trait of a person or thing is used to make an overall judgment of that person.